Next, we move to our next chapter is the theories of interest of advanced bank management CIB. As we all know that what is interest? Interest means it is a payment made by the borrower for the use of the sum paid for him for a period of time. किसी बोरोवर जो लोन लेता है उसके अगेंस्ट में हमें जो पेमेंट करता है वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है एज वेल एज प्रिंसिपल पेमेंट करता है लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ interest is also the part of payment. Interest is a payment for making loan, payment for taking risk, high high interest rate, and low risk, low payment as a pure interest. So there will be also the differences in payment means there will be the higher rate of interest and there will be the lower rate of interest. At higher rate of interest, people will demand less money at less less level of interest rate. The people will demand more money. if we think about interest में सोचे तो अनसिक्योर्ड लोन होती है उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और सिक्योर्ड लोन होती है उसमें हमें लेस इंटरेस्ट रेट होता है रिलेटिवली लेस इंटरेस्ट होता है क्योंकि रिस्क कम होता है और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिस्क ज्यादा होता है इससे सो द हायर द लेवल ऑफ रिस्क higher will be the rate of interest and vice versa. Now we come about the Kinney's liquidity preference of interest rate. जेम केनिस एक महान इकोनॉमिस्ट था उसने अपनी एक बुक थी द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में ऐसा कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट जो सप्लाई और डिमांड डिसाइड होता है ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ मनी एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी पे इंटरेस्ट रेट डिटरमिन. He has mentioned it that his phenomenon about the determination of interest rate is purely monetary phenomenon and it is known as the liquidity preference theory. The term liquidity means we hold money is in the liquid form. Means cash. हम जो कैश रखते हैं उसको हम लिक्विड बोलते हैं बेटे. लोग लिक्विडिटी अपने पास कैसे कितनी रखेंगे और इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे वो इसके बारे में केनिस ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में बताया. सो कोई भी थियरी हो तो उसमें कुछ अज्यूम करना पड़ता है. तो इन हिज थियरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस ही अज्यूम्स दैट देयर आर in one economy, it means in there's an economy, it means there are only two assets. One is money and another is long-term bonds. Money means we preserve the money in the form of cash. कैश कितना रखेंगे और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मतलब वो जो कैश है उनको हम बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे. There are only two assets, money and long-term bonds. And he also assumes that there will be the inverse relationship between the bond prices and rate of interest. Yeah, the higher the level of income, more money people will hold in their portfolio. इनकम लेवल ज्यादा होगा तो लोग ट्रांजेक्शन पर्पसेस के लिए मनी का ज्यादा उपयोग करेंगे. सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द हायर द लेवल ऑफ इनकम मोर मनी पीपल विल होल्ड इन द पोर्टफोलियो एंड हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल द डिमांड फॉर मनी. इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मनी की डिमांड कम रहेगी एज वी हैव सीन that the higher rate of interest lower will be the demand for money and lower the rate of interest higher will be the demand for money. So there's the inverse relationship between the demand for money and interest rate. There's another assumption that people will hold more money in the form of bonds at the higher rate of interest. इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से लोग कैश ज्यादा नहीं रहेंगे अपने पास लेकिन वो बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे. एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल विल होल्ड मनी in the form of bonds, not in the form of cash, because we are assuming the economy where there is only two assets, money and long-term bonds. Or the interest rate and the price of bond has inverse relationship. It means the rate of interest of bond is high, lower with the price of bond, and vice versa. With low level of income, higher price of the bonds, people will hold more money in the form of cash rather than holding in the form of bonds. इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बॉन्ड में ज्यादा पैसा रखेंगे. बॉन्ड में ज्यादा पैसा नहीं, सॉरी, विथ लो इंटरेस्ट रेट लोग कैश में अपना पैसा ज्यादा रखेंगे, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो द मनी डिमांड का दिस इज द मनी डिमांड का
where the quantity of money is measured at x-axis and rate of interest is measured at y-axis. If we talk about the money demand curve, as we see that with the rise of the interest, the money demand will fall. And with the fall in the interest rate, money demand will rise. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मनी डिमांड कम होगी. इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम लोन ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो हम लोन लेना कम प्रेफर करते हैं. The same scenario applies to this, that the rise of the interest, quantity of money demanded for money will fall, and vice versa. So there's a downward sloping liquidity preference curve, downward sloping money demand curve, because fall in interest will increase the demand for money. So if we summarize this money demand curve, that fall in the interest rate will, इंटरेस्ट रेट फॉल होने से मनी डिमांड बढ़ेगी. मनी ऑफ डिमांड बढ़ने से इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से राइज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स. और राइज ऑफ द प्राइस ऑफ बॉन्ड, नॉमिनल इनकम बढ़ने से लोग क्या करेंगे कि बॉन्ड में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और बॉन्ड में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने से बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी. सो कोई भी चीज की खरीदारी ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है. द सेम phenomenon will apply to this, that the increase in level of nominal income, increase in the quantity of demand of money will raise the level of nominal income, and because the rise in the level of income, the people will hold more bond in rather than cash, and this will make the bond prices to rise. And as we see that there is an inverse relationship between the bond prices and rate of interest. So this is the, we have seen money demand curve. Next topic is the determination of interest rate equilibrium in money market. According to James Guinness, the interest rate is determined by the demand for money and supply for money. Demand for money, if we assume demand for money, it does not mean demand for money in the in as an investment purpose. Money demand is considered as the liquidity. हम cash कितना रखते हैं हमारे हाथ में वो depend है. So the demand for money is the liquidity and supply of money. So here is the curve for the interest rate determination. Interest rate कैसे decide होता है? So there are certain assumptions made for deriving this curve. There is a fixed money supply. Money supply curve fixed दिया हुआ है. First we see that the quantity demand for money is measured on x-axis, rate of interest is y-axis. And as we see that interest rate बढ़ने से money demand कम होगी, and vice versa. So there's a downward sloping demand curve. This is the downward sloping demand curve LP. Money demand curve, downward sloping demand curve. This is the demand curve and this is the supply curve. It's the money supply curve. So initially there will be the fixed money supply, it's 200 crore. At 200 crore, at 200 crore, the quantity demand and quantity supply is equal at the rate of interest of 10. It means at the rate of interest 10%, the quantity demand and quantity supply is equal. So this Jenkins determines that the interest rate is determined by demand for money and supply for money. So how we can say that in this two asset economy that the interest rate 10 is in equilibrium. So according to Jenkins, if we assume that the interest rate is 12%, if we assume that interest rate 12%, this is the demand curve and this is the supply curve. So at interest rate 12, there is an excess supply than demand. सप्लाई ज्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगी, और ज्यादा मनी सप्लाई ज्यादा होने से लोग क्या करेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा रहने से वो लोग बॉन्ड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और बॉन्ड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से there will be the rise in the bond prices, and rise in the bond prices means there will be the fall in the interest rate. तो अगेन और 12 से घट के 10% पर आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है, assumption किया है कि there will be the inverse relationship between the rate of interest and the bond prices. So at 12% interest rate,
there will be the excess supply, and this excess supply will make the people to invest in bond. This will make the rise in the bond prices, and there will be the fall in the interest rate. If we summarize this, we can see here. Now let us consider the another case where the rate of interest is 8%. At rate of 8%. So this is the supply and it is the demand. So there will be the more demand than supply. So this excess supply से क्या होगा? This excess supply, so the people will start selling their bonds, and the selling in the bond will lead to the fall in the prices of the bond, and this fall in the prices of bond will lead to the rise in the interest rate. So again we come increasing the interest rate from 8% to 10%, where demand for money and supply for money is equal. So can you show this theory of demand for money and supply of money, which determines the interest rate? Okay. Now, last topic is effect of increase in supply of money. Money supply is increase होने से क्या effect रहेगा? As we have already seen, now consider this graph where the on x-axis quantity of money is measured and on y-axis is the rate of interest is measured. So in the beginning, interest rate is OR, where the quantity supply is ON. So at OR interest rate, at OR quantity supply, the interest rate is OR and the equilibrium point is E. Now suppose there will be the rise in the money supply from MS1 to MS2. मनी सप्लाई बढ़ गया है ON से ON से, तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ने से people will start selling bonds. This is the effect. Increase in money supply से the rise in the purchase of bond price, bond की खरीदारी में बढ़ावा होगा, और बॉन्ड की खरीदारी में बढ़ावा होगा तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी, और बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ने से इंटरेस्ट रेट फॉल होगा. There will be the fall in the interest rate because bond prices and rate of interest are inversely related to each other, if we have assumed in the Keynesian theory. कि कोई भी चीज की खरीदारी में हमने देखा कि बढ़ोतरी होगी तो उसके प्राइस में बढ़ोतरी होगी. The increase in money supply will lead to the rise in the prices of the bond, and rise in the price of bond will lead to the rise in the bond prices, and bond prices बढ़ने से fall in the interest rate कम होगा. So these are the effects of increase in money supply. So next topic is shift in the demand for money or liquidity preference curve. Money demand rise होने से बढ़ने से क्या होगा? As you have seen that money supply, यहाँ पे हमने ऐसा एज्यूम किया कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ाएगा कौन? कोई भी कंट्री के सेंट्रल बैंक में मनी सप्लाई बढ़ाएगी. कैसे बढ़ाएगी? अपने बॉन्ड सेल करके. लेकिन मनी डिमांड बढ़ेगी कैसे? तो उस पर दो फैक्टर डिपेंड है. एक है अगर इनकम का लेवल बढ़ेगा, और दूसरा हम एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट फॉल होगा या राइज होगा, या बॉन्ड प्राइसेस राइज होगी या फॉल होगी या कम रहेगी. क्यों हम इंटरेस्ट रेट राइज फॉल और बॉन्ड प्राइसेस राइज फॉल के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि केनेशन ने ऐसी इकोनॉमी का अजम्पशन किया है जहां पे ओनली दो ही एसेट्स हैं. एक है मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश और दूसरा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. So let's see when there will be the increase in the demand, a shift in the money demand curve. So here is the graph drawn where on x-axis there is the quantity of money is measured, on y-axis there is the rate of interest measured. Initially there will be the OR interest rate, and OR in the quantity of money. So there will be equilibrium at point E, where demand for money and supply for money is equal. Now suppose लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कि इस दो एक्सपेक्टेशन से ही मनी डिमांड हमारा शिफ्ट होगा. तो सपोज लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में राइज होगा, तो अभी क्या करेंगे? हम बॉन्ड को सेल कर देंगे, और
बॉन्ड की प्राइस सेल होने से क्या होगा, उसकी प्राइस कम होगी, और प्राइस बॉन्ड की कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. So interest rate will rise from OR to OH, and there will be a new equilibrium point where money supply and money demand is equal. And this is the point here. If we summarize this effect of money demand on our curve, that the rise in the money demand for speculative motive will rise the money demand. मनी डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि लोग बॉन्ड सेल कर देंगे, बॉन्ड सेल करने से क्या होगा, फॉल इन द बॉन्ड प्राइसेस, एंड बॉन्ड प्राइसेस फॉल होने से क्या होगा, राइज इन द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.